नमस्कार पिलाने तो आज मॉक सेशन आरंभ करवा प्रिलिम पाई ओपीसी प्रिलिम रो अक्टोबर 12 रो प्रिपरेशन तुम्हें जोरदार चलई कॉन्फिडेंस रुह एवं थरोली देख सब जिनस करेन्ट अफेयर बेस्ड रे 2024 रो टू एपर्यंत करेन्ट अफेयर प्रेमिसेस उपरे बा तारी उपरे तुम क्वेश्चन गुड़ा को निर्धारित कर सबुरा इंपोर्टेंट न हो पारे किंतु बेसिक जिनस जोटा गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन चेंजेस होती कि किसी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस होती किसीटा नुआ जिनस किसीटा नुआ कॉन्सेप्ट आसगुड़ा ही तुम बेसी हाईलाइट कर ठीक अच्छे मुझे सेमती चेष्टा करुँची जी क्वेश्चन पार आज आरंभ करवा आज मॉक टेस्ट एटा 2 हम 30 दिन महाकुंभ आम देखुचे पॉलिटी सीरीज बाकी आमर माराथन भी जारी रहिबो काली शनिवार दिन प्रति शनिवार माराथन जारी रोचे तो निश्चित भाव में आडा 247 ओपीएससी को जो मैंने सब्सक्राइब करनब एवं रेगुलर देख यहाँ it will be definitely beneficial for your upcoming preliminary examinations. It is also useful for the examinations like ASO and other level examinations. ठीक है आरंभ करिबा तो before that look at the inspiring quote of the day. Work hard in silence, let success make the noise. आमे साइलेंट रे काम करिबा एवं जो दिन सफलता पाइबा से दिन वीडियो रिकॉर्डिंग हम वाईटी रे आसीबो सोशल मीडिया रे आसीबो इंटरव्यू हम बहुत सारा संवर्धना आसीबो सेतेबेले लोक जानतु एबे न जानतु कि आमे कोन करूचे बड़ा डेफिनेशनटा मेक हार्ड वर्क इन साइलेंस लेट सक्सेस मेक द नॉइज आज ये अच्छी आमर पर्पल फेस्ट 2025 यहाँ पे दिव्यांग मान कराइला तो क्वेश्चन पचारि पारे पर्पल फेस्ट 2025 टा कहाँ कराइला ना दिव्यांग लोकों कराइला जोटा कि आमर इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ISLRTC एंड आमिटी यूनिवर्सिटी कोलाबोरेशन कराई पर्पल फेस्ट आरंभ करवा आम तो पॉलिटीर किसी क्वेश्चन आज भी अच्छी आम पाखे देखा आज क्वेश्चन ठीक है स्टार्ट कर दो डायरेक्ट लुक एट द कोट टुडे लुक एट द क्वेश्चन फर्स्ट व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द राइट टू प्राउड पे आ पूर्व गोटे कथा मुझे कहीदे चाहे कि मोर जो फास्ट मॉक टेस्ट होता से आम क्वेश्चन नंबर 1 जोटा प्रथम क्वेश्चन रे सेटा टिके बाय मिस्टेक कहला कि वाइस प्रेसिडेंट जो वैकेंसी हम वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस रे जो अच्छी आमर कौन डेथ रेजिग्नेशन रिमूवाल इलेक्शन डिक्लेयर्ड भॉइड ये 4टी ग्राउंड रे जो वैकेंसी हुए से इलेक्शन एज सुन एज पॉसिबल हो बोली आर्टिकल 68 रे कहुई यहाँ मु बाय मिस्टेक कहीदी 6 मास भितर ऑप्शन ठीक थिला से कमेंट रे मु लिखिदे कि ऑप्शन बी हम ओनली 2 हम कारण जो 68 रे जो कही 6 मंथ से कहुई से एज सुन एज पॉसिबल कहुई तो आरंभ करिए आज क्वेश्चन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली नेदर फंडामेंटल नॉर लीगल तो केबे फंडामेंटल राइट्स तो नुहे से यहाँ आम भल से प्राय जाचे जो मैंने भी पॉलिटी अल्प टिके पढ़ी से भी जानते तेणु यहाँ 300 ए रे जो राइट टू प्रॉपर्टी अच्छी तो सहीटा हूँ गोटे कौन लीगल राइट बोली आम कहीपर कन्स्टिट्यूशनल राइट हम लीगल राइट कन्स्टिट्यूशनल राइट लिखाई तेणु यहाँ हम कन्स्टिट्यूशनल राइट भी कहुए कारण कन्स्टिट्यूशन भी गोटे लॉ लीगल राइट कहले कौन बुझा आम स्टैट्यूट रू जो लॉ आसी लीगल राइट द राइट टू इनफॉरमेशन टा राइट टू इनफॉरमेशन एक्ट रे अच्छी स्टैट्यूटरी लॉ बा लीगल लॉ तेणु से भी लीगल लॉ कन्स्टिट्यूशन रू भी जोटा आसी कन्स्टिट्यूशनल राइट कहुए लीगल राइट भी आम कही पारिबा तेणु राइट टू प्रॉपर्टीटा आर्टिकल 300 ए रे अच्छी एवं एटा पार्ट कौन अच्छी XII रे अच्छी तेणु यहाँ बर्तमान सबू पर्सन को अवेलेबल हो खाली नागरिक मान को नुह विदेशी मान को भी आगर तो आंसर बी हम यहाँ नहीं कि नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग आधार कार्ड कैन बी यूज्ड एज ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल once issued Aadhaar number cannot be deactivated or omitted by the issuing authority which of the statement given above is are correct प्लान जब देखिबा में आधार कार्ड गोटे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी बा सिटीजनशिप नुह एटा ऑफिशियली कह जाए नहीं
तेणु यहाँ आइडेंटिटी गोटे प्रूफ केवल डोमिसाइल नुह कि सिटीजन से गोटे आइडेंटिटी कि आम जड़े व्यक्ति आम बंचीचु आम आम गोटे आइडेंटिटी आमर किंतु सिटीजनशिप प्रूफ यहाँ नुह कि डोमिसाइल रेसिडेंस भी यहाँ प्रूफ नुहे यहाँ भूल हम बाकी यहाँ जो देजी कैन नॉट बी इट कैन बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड इन केस ऑफ एनी discrepancies in case of death of the person the number will be deactivated so that is not that कि it will permanently use जदि एटा परमानेंट नंबर रहे व्यक्ति बंचित हुआ पर्यंत ठीक अच्छे तेणु यहाँ भूल हम तेणु बोथ नेदर वन नॉर टू बोध हम नहीं कि नेदर वन नॉर टू हम कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड इट कैन बी डीएक्टिवेटेड ओके देखिए तार सॉल्यूशन भी मुझे रखी Section 9 of Aadhaar Act 2006 the Aadhaar number and the authentication thereof shall not by itself confer any right or be a proof of citizenship or domicile in respect of an Aadhaar number holder ठीक है तो इटार से जो फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूफ अच्छी तेणु यहाँ सिटीजनशिप प्रूफ हो पार ना ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द फेडरेशन एस्टाब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट of 1935 residuary powers were given to Government of India Act 1935 रे जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता फेडरल लिस्ट कनकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट बा प्रोविंशियल लिस्ट हिसाब से जोटा थिला से जो रेसिडुआरी पावर्स थिला सेटा गवर्नर जनरल हाथ में न्यस्त थिला एबे हमर जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम रे रेसिडुआरी पावर्स का पार्लियामेंट को दिया रेसिडुआरी पावर्स माने पावर्स नॉट मेंशन्ड इन द 3 लिस्ट 3टा लिस्ट रे जो पावर नाही सेटा को हमें कह जाए कौन रेसिडुआरी पावर तेणु सेटा गवर्नर जनरल को देइथिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रे वर्तमान मन रख कि जोटा रेसिडुआरी पावर्स इज नाउ वेस्टेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट हाथ में दिया अर्थात पार्लियामेंट रेसिडुआरी पावर ऑफ लॉ मेकिंग एग्जीक्यूटिव रो रेसिडुआरी पावर डिसीजन मेकिंग अच्छी ठीक अच्छे बी तमें रेसिडुआरी पावर्स मीन्स पावर नॉट मेंशन्ड इन द लिस्ट यहाँ देखिए पे जोटा अच्छे आमर द वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीजिम एंड मार्क्सिज्म गांधीवाद और मार्क्सिज्म भितर जो माने कि बेसिकली तो गांधी मार्क्स गोटे सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी चाहूले जो प्रोलेटेरिएट मानकर अधिक गुरुत्व कहते किंतु गांधी सेगुड़ा एत कथा कहून से केवल स्टेटलेस सोसाइटी अर्थात स्टेटलेस जोटा अच्छे आमर कौन स्टेटलेस सोसाइटी उपरे माने राष्ट्र भूमिका कम रही गांधी कहते जदिव पूरा मार्क्स जो कंप्लीट स्टेटलेस सोसाइटी कथा से कहून किंतु स्टेट लेस इंटरफेरेंस करिवो मोर इंडिविजुअल इंटरफेरेंस रही गांधी कहते तेणु से गोटे जिनस दी जनकर सामंजस्यता प्रकाश पाई थाए बोली जना पड़े तेणु आंसर हम ए ओके तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आसो द भोट ऑन अकाउंट इज पास्ट भोट ऑन अकाउंट हूँ आर्टिकल 116 रे जोटा अच्छी आर्टिकल 116 रे अच्छी भोट ऑन अकाउंट गोटे एडवांस मनी दि जाए बजेट पास हवा पूर्वर जदि फाइनेंशियल ईयर आरंभ हो जाए ताले सरकार को पार्लियामेंट तत्वावधान रे गोटे एडवांस दि जाए बजेट पैसार 1/6 अमाउंट दि जाए ताकू एवं से एडवांसटा एडजस्ट हुए तेणु से भोट ऑन अकाउंट कहते हैं जदिव भोट ऑन अकाउंट उपयोगिता वर्तमान समय ना कारण वर्तमान बजेट आमर फेब्रुआरी फर्स्ट वीक रे इंट्रोड्यूस होची तेणु टाइम भितर पास हो जाए हो जाऊँगी तेणु से वर्तमान भोट ऑन अकाउंट एत गुरुत्व ना तथापि जेकोसी सरकार नहीं पार जमती आम केयरटेकर गवर्नमेंट भी नहीं पार इंटरिम बजेट रे भी भोट ऑन अकाउंट आसपर यहाँ केवल एक्सपेंडिचर अर्थात खर्च दि जाए से किसी इनकम न थाए बा इनकम साइडटा न थाए तेणु सेटा इंटरिम बजेट टू भिन्न बोली कहुए भोट ऑन अकाउंट तेणु यहाँ आफ्टर द वोटिंग ऑफ डिमांड्स आफ्टर द वोटिंग ऑफ डिमांड्स हम ए डिमांड्स वोटिंग ऑफ डिमांड्स सरला परे अप्रोप्रिएशन बिल पास हवा पूर्वर कौन हुए ना भोट ऑन अकाउंट दि जाए भोट ऑन अकाउंट गोटे एडवांस मनी टोटाल बजेट जी परिमाण अंक जी टंका आगत हो बजेट रे तार 1/6 माने 1/6 पैसा दि जाए सरकार को एडवांस कारण फाइनेंशियल ईयर जेहेतु आरंभ हो जाए ठीक अच्छे यहाँ प्राय आगुरी होता
एबे जेतु बजेट बहुत अर्लियर इंट्रोड्यूस होउची तेणु आर उपयोगिता जनरल बजेट रे बेसी नाही बेली देखा जाउची तो ए हबो आंसर। नेक्स्ट आसीबा मते हु सेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश्ड ए यूनिटरी स्टेट with subsidiary federal features rather than federal state with subsidiary unitary features। एटा किए कहितले एटा क्वासी फेडरल जो कहतले हमर फेडरेशन विथ सेंट्रलाइजिंग एंड टेंडेंसी तेणु आम मोर यूनिटरी दैन फेडरेशन बेले आम कहवा कारण वी हैव ए स्ट्रॉन्ग सेंटर इंडियन फेडरेशन रे कौन सेंटर रो अधिक क्षमता दिखाई बहुत क्षेत्र में तेणु अमेरिका भली आम क्लासिकल फेडरेशन बा कमिंग टुगेदर फेडरेशन नुहे इंडिया गोटे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन से सेंट्रल गवर्नमेंट रो अधिक क्षमता थे तेणु ए कथाटा से जो क्वासी फेडरल नेचर को बुझाऊँ। क्वासी फेडरेशन इंडिया इज ए क्वासी फेडरेशन तेणु केसी होयर हम डी केसी होयर कहते क्वासी फेडरल कथा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। The correct statement about ordinance making power of the governor, it is ordinance making power of the governor विषय कुहाइछि। It is laid down in the constitution, it is laid down in the constitution in article 213 it can be issued by him after the instruction of the president or the advice of the state council or minister। It is coextensive with the legislative power of the state legislature। It can be issued by during any recess of the state legislative assembly or not the legislative council। It cannot be withdrawn by him at any time। एटा ठीक हबो एटा भी ठीक हबो प्रेसिडेंट को एडवाइस दरकार। इट इज कोएक्सटेंसिव भी ठीक हबो किंतु एटा भूल हबो कारण केवल ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड नॉट लेजिस्लेटिव काउंसिल सेमती किछि नाही दीटा जाक हाउस रिसेस रे थिले हबो। जदि गोटे हाउस रिसेस रे थिबो गोटे हाउस जदि ऑफ थिबो माने सेशन चाली नथिबो ताल भी हेई परिबो सेटा असेंबली हेई पारे काउंसिल हेई पारे तेनु दीटा जाक हाउस जेतो सेशन रे नथिबे सेतबेले ऑर्डिनेंस आसे गोटे हाउस जेतो सेशन रे नथिबो भी ऑर्डिनेंस आसीबो कारण जो राज्य गुड़िक बाइकैमराल सेटअप अच्छी से बिल पास होगापी दीटा हाउस सहमति जमती दरकार तेनाली सेमती किसी ना यहाँ भी हम। इट कैन बी विथड्रॉन एट एनी टाइम ऑर्डिनेंस करें तेणु आंसर 1 2 3 हम बोली आम देखुचे। देखिए ऑप्शन कौन अच्छी 1 2 3 ऑप्शन अच्छी सी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following acts introduced the principle of election in India? को act principle of election जो elections रो नीति बा election भलिया गोटे प्रोविजन करतला प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन जदियो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम टा 1909 रे ओ हितला किंतु एटा से कुछ को एक्ट रे प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्शन जारी हितला ठीक है चिंता करो। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को एक्ट रे हितला कौन इंडियन काउंसिल एक्ट रे हितला कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1902 इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19 हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 बी हम। इतने पे नॉमिनेशन करने जो लोकल बोर्ड्स लोकल बॉडीज आउ चैम्बर ऑफ कॉमर्स जमींदार्स एमान को पावर दिया से माने किसी संख्यक मेंबर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को नॉमिनेट करेंगे। जदियो इलेक्शन शब्दटा एथिरे व्यवहार ही नथिला किंतु कहा जाए कि जेहेतु इंडियन मान को नॉमिनेट करिवार क्षमता प्रथम थर दिहाइतला तेणु यहाँ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन को इंट्रोड्यूस करुच्ची बोली कहा जाए किंतु एथिरे इलेक्शन शब्दटी व्यवहार ही नथिला सेटा ही मन रखियो पड़िबो कि एथिरे इलेक्शन शब्दटा व्यवहार ही नथिला।
Next, no confidence motion to be admitted in the Lok Sabha needs the support of. No confidence motion कहले आम जानी अनास्था प्रस्ताव जार बेसटा आम पाचे कौटी आर्टिकल 75 रे कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी जो जदिव यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन रे एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किंतु यहाँ इम्प्लिसिट अच्छी बोले आम कहीपर कारण लोकसभा केवल नो कॉन्फिडेंस मोशन आनीपर कारण काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा तेणु यहाँ सपोर्ट पाई 50 जन मेंबर दरकार सपोर्ट डी हम आंसर एवं ए 50 जन मेंबर माने ऑफ लोकसभा ओनली केवल लोकसभार मेंबर 50 जन जदि लिखित भाव में देवे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आसवा ताहले सेटा हो पार एवं यहाँ वर्ष को मैक्सिमम 2 टाइम्स आसीपर गोटे सेसन रे थरे आसपर तेणु एमती किसी रेस्ट्रिक्शन रही एवं भारत में अनेक थर नो कॉन्फिडेंस मोशन आसी इंदिरा गांधी विषय विरुद्ध में मैक्सिमम नो कॉन्फिडेंस मोशन आसला भारत 3 जन प्रधानमंत्री नो कॉन्फिडेंस मोशन रे हारिकी इस्तीफा देते से माने हेले बीपी सिंह एसडी देवगौड़ा अटल बिहारी वाजपेयी आंसर डी हो नेक्स्ट द अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग ड्यू एक्शन ऑन द गवर्नमेंट ऑफ द कमेंट्स ऑफ द सीएजी भेस्ट विथ कहा उपरे सीएजी रो डिसीजन बा रिपोर्ट उपरे की एक्शन नहीं थाए बस सर्वश्रेष्ठ क्षमता क्या दिखाई कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जी आर्टिकल 148 रे निहित अच्छा से तांकर रिपोर्ट्स बा तांकर कमेंट्स उपरे किए अल्टीमेटली काम करे ये देखा यहाँ ओब्वियसली आम जाना कि यहाँ पार्लियामेंटर काम कारण पार्लियामेंटर से फ्रेंड फिलोसोफर गाइड कह जाए एवं फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव बाय द पार्लियामेंट इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड बाय सीएजी सीएजी ही पार्लियामेंट को एनाबल करे टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव ओवर पब्लिक फाइनेंस ସେଥିପାଇଁ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स बोली कह जाए तेणु आंसर ये हम आसवा आम नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा ओके ओके The accounts of the union and the state shall be kept in such a form as prescribed by CG of India with the approval of the Finance Minister of India in consultation with CG of India, CG of India in consultation with Niti Aayog, CAG of India with the approval of the President of India and President of India in consultation with the CAG of India. Could have. Yes, please. Guess the answer. ओके तो पे अकाउंट प्रेस्क्राइब करने कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जेहेतु से ऑडिट करती तेणु प्रेस्क्रिप्शनटा ही फॉलो करा जाए किंतु सेटा प्रेसिडेंट अप्रूवल बा सरकार अप्रूवल दरकार कारण से माने ऑटोनोमस बॉडी नुह से माने जहाँ भी करेंगे प्रेसिडेंट को अप्रूवल बॉडी जदिव इंडिपेंडेंट था किंतु से माने प्रेसिडेंट को अप्रूवल दरकार तेणु यहाँ आंसर सी हम CAG of India with the prior approval of the President. चलो आसो नेक्स्ट क्वेश्चन को
which of the following is not a condition of admissibility of court motion in the parliament? Not a condition. It should not make suggestions for amendment of existing laws. It should not relate to expenditure on the consolidated fund of India. It should relate to more than one demand. It should not raise a question of privilege. Privilege लिखा है तले देखि पड़तिबो स्क्रोलिंग टा मु बंद कर दूची जानि परिबो सेटा privilege. It should not raise a question of privilege. Privilege माने मेंबर ऑफ हाउस रो अधिकार विषय रे कट मोशन हबा कथा सिकुछ. एटा देखिया कंडीशन सब ठीक अछि किंतु ए जो कंडीशन टा देछि देखिए वन डिमांड इट शुड रिलेट टू वन डिमांड सेटा हबो नाही. एटा हबो नाही कहीं कि ना वन कट मोशन वन डिमांड ऊपर आसो. डिमांड माने जो मनी सैंक्शन हुए ताको डिमांड कहती गोटे गोटे स्कीम अनुसार सर्विस अनुसार तो से गोटे डिमांड ऊपर गोटे कट मोशन आसो. ये कही इट शुड रिलेट टू मोर देन वन डिमांड सेटा हबो नाही. तेणु आंसर सी हम. बाकी गुरा ठीक अच्छे सब कट मोशन उपर यहाँ कौन आमेंडमेंट करनी केवल एवं चार्ज एक्सपेंडिचर जोटा नॉन भोटेबल एक्सपेंडिचर जोटा रिड्यूस करहबनी तापरे कट मोशन आसब ना कारण से अपरिवर्तनीय रही वन डिमांड वन कट मोशन सहित रहे. तेणु गोटे डिमांड पे गोटे कट मोशन आसब. ओके बाकी यहाँ प्रिविलेज उपरे अर्थात मेंबर मानकर पॉइंट उपरे आसब ना अधिकार उपरे आसब ना. ठीक अच्छे. ओके आरंभ करिए नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अच्छे बेकार ट्रेंड नो एक्सपेंडिचर कैन बी इनकर्ड विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट. Our democratic government like that of Britain is based on the concept of sovereignty of parliament. First तो ठीक अच्छी no expenditure can be incurred without the approval of parliament. No money can be sanctioned from the consolidated fund of India except by an appropriation act passed by parliament. इटा कुहाइछ तो सहीटा ठीक अच्छे किंतु एटा आम ठीक बोली कही परिबानी कारण कॉन्सेप्ट ऑफ पार्लियामेंटरी सॉवरेंटी जोटा अच्छी it is not that based upon that. We don't have parliamentary sovereignty. Jadio parliament is a sovereign by independent institution but it is not as sovereign as British institution. I think this statement is incorrect. Then statement 1 or 2 जोटा सेपटे अच्छे आंसर देखिबा. Statement 1 is correct. Statement 2 is not correct. तो एटा मु भाबुची सी हबा आंसर. Which of the following amendments, next question, which of the following amendments is constitution for the first time made it obligatory for the president to act on the advice of the council of minister? प्रथम को amendment council of minister रो advice राष्ट्रपति को दिया जाउथिबा advice गुडी को obligatory हबो बाध्यतामूलक हबो एटा को amendment रे कराइतला. एटा जदियो constitution रे 74 आर्टिकल रे अछि कि राष्ट्रपति जहाँ करेंगे से मंत्रिमंडल एडवाइस रे करेंगे. यहाँ किंतु ओब्लिगेटरी कि ओब्लिगेटरी नुह से कथाटा एक्सप्लिसिटली क्लियर नथिला एक्सप्लिसिटली मेंशन है नथिला. से 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे इंदिरा गांधी कले कि एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर शैल बी ओब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्ट. एवं 44th रे गोटे करागला कि प्रेसिडेंट मे सेंड बैक द डिसीजन फॉर रिकन्सिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वंस एंड अपॉन रिकन्सिडरेशन द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट बाउंड टू एक्सेप्ट. तो थरे फेरे 42nd एटा आंसर हम बी. 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे एड एंड एडवाइस को बाइंडिंग कर दिया गला अर्थात से गुड़िक बाइंडिंग ही रहा अर्थात मंत्रिमंडल उपदेश को राष्ट्रपति आग्राह करें ना एंड दैट हैज रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके राइट. चलो थिला काली भी आनी आज भी रखी नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट लास्ट सेशन में रखी ये मत बहुत भल लगे.
Smart work is also important, but it is not a replacement of for hard work. Smart work hard work रो replacement नुह. आज के जुग रे हमें इंटरनेट रे यूट्यूब रे बहुत फ्री कंटेंट पाउचे. स्मार्टली हमें बहुत सारा पीडीएफ अपलोड कर दूचे, सब कर दूचे, किंतु माइंड कल्टिवेशन होनी. माइंड कल्टिवेशन टा हार्ड वर्क हम पढ़े पड़ो, कषे पड़ो, देखे पड़ो, बारंबार ताकू तर्जमा करिया पड़ो. You should make yourself question. You should answer yourself questions. So smart work is no doubt necessary, but hard work is a must. So that is a kind of things we have to remember. Okay. Then Pratishtha batch kata mu कहइथिली. Pratishtha batch फाउंडेशन बैच ओपीएससी रो एवं एथरे कंप्लीट जीएस पेपर 4 जीएस पेपर जो मेंस रे अछि, प्रीलिम और मेंस रो सब पेपर गुरा रहउछि, केवल ऑप्शनल को छाड़ देले. इवन वी हैव एसे प्रोग्राम आल्सो. सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स इज अवेलेबल ऑनलाइन ऑन आडा 247 ऑफिस चैनल. सो निश्चित भाव में जो माने कैरियर नबा को चाहूछ थरे ट्रायल नियो. अल्प अफोर्डेबल प्राइस रे कराइछि, जोटा कि तुम पे एते कॉस्टली हेबनी एवं सेम क्वालिटी पाइबो, सेम कंटेंट पाइबो, सेम टीचर्स, एक्सपीरियंस टीचर्स को कोचिंग पाइबो. ठीक है. जॉइन प्रतिष्ठा टू स्टार्ट योर कैरियर इन सिविल सर्विस. ओके. नेक्स्ट है बोला all revenues received by the union government by way of taxes and other receipts for the conduct of government of business are credited to by the union government. Union government हो बा state government हो, जहाँ भी receipts हुए taxes और other receipts जो अच्छी हमरो interest payment हला ये हला जहाँ भी सरकार पाउचंदी से सब गुड़ा credit हुए कोटी की ना consolidated fund of India credit हुए. तापरे सेटा ग्रांट और बजेट बा सैंक्शन करिके सेटा सरकार को पैसाटा दिया हुए. तेणु पैसाटा डायरेक्ट क्रेडिट हुए कोटी की कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सी. बड़ा क्वेश्चन एटा पढ़ी 2011 रे. ओके. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन द एनुअल यूनियन बजेट इज नॉट पास्ड बाय लोकसभा, व्हाट हैपेंस? जेतबेले बजेट पास हेबनी लोकसभा रे सेतबेले कोन हबो? द बजेट इज मॉडिफाइड एंड प्रेजेंटेड अगेन. द बजेट इज रेफर्ड टू द राज्यसभा फॉर सजेशंस. The Union Finance Minister is asked to resign. The Prime Minister submits resignation of the Council of Ministers. प्लान बजेट हो, बिल हो, जहाँ भी हो, सरकार जोटा पार्लियामेंट रे आनिबो जदि पास न होउछि ता माने कोट ना कोटी सरकार को मेजॉरिटी ना. एंड मेजॉरिटी ऑफ द रूलिंग पार्टी इज ए मस्ट, at least in Lok Sabha. If the government does not have majority in the Lok Sabha, then it will not be there. तो कहना it is best collective responsibility कहते. The Council of Ministers headed by Prime Minister is collectively responsible to Lok Sabha. Means the Council of Ministers headed by Prime Minister will continue to rule but govern the country until they have majority in the Lok Sabha, and that is called party majoritarian. जोटा अच्छी हमर पार्टी मेजोरिटी ऊपर बेस करे पार्लियामेंटरी सिस्टम. सरकार जिते कॉम्पिटेंट हो, यदि लोकसभा मेजोरिटी नहीं ताले से रही परिबो नहीं. तेणु यहाँ हम कौन ना प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करते. तामाने बजेट जेतु पास होनी तामाने लोकसभा रे तांकर मेजोरिटी नहीं. तेणु दैट विल लीड टू कोलैप्स ऑफ द गवर्नमेंट, एंड दैट इज डी. नेक्स्ट से बोलाने डेप्यूटी स्पीकर एवं न्यूज रे अच्छी कहीं डेप्यूटी स्पीकर दीटा लोकसभा रे अपॉइंटमेंट इलेक्टेड हो ना. तेणु यहाँ गोटे निश्चित भाव में गोटे कौन अक्वार्ड डेवलपमेंट हो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम रे. तो से क्वेश्चन तुम पचारि पारे से किसी क्वेश्चन अच्छी. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अच्छा यहाँ मिनिस्टर. अच्छा, the Constitution of India classifies the ministers into 4 ranks: cabinet ministers, minister of state with independent charge, minister of state, and deputy minister. The total number of ministers in the union government, including the prime minister, shall not exceed
15% of the total number of members in the Lok Sabha. Plan जदि आम देखा जदि कि जो मिनिस्टर्स अच्छा टाइप्स ऑफ मिनिस्टर जोटा लिखाई देखिपो कैबिनेट मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ स्टेट और मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज डेप्यूटी मिनिस्टर एमाने सबू निश्चित भाव में इंडिया मिनिस्टर्स किंतु एगुड़िक कॉन्स्टिट्यूशन रे मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन केवल कहते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कथा याकू आम निजे कहूचे यहाँ मिनिस्टर एक्ट जो सैलरी जो पेंशन एक्ट गोटे अलाउंस एक्ट अच्छी से लिखाई तीन प्रकार मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ स्टेट आउ डेप्यूटी मिनिस्टर कारण मिनिस्टर ऑफ स्टेट और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज एका रैंक तेणु से थांती मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज जी से इंडिपेंडेंटली गोटे डिपार्टमेंट गोटे मिनिस्ट्री दिखाई थाए कैबिनेट मिनिस्टर कहीं न था तेणु से कॉन्स्टिट्यूशन रे मेंशन ना किंतु एमाने सब भारत मिनिस्टर यहीटा ठीक अच्छे 15% यहाँ 91st अमेंडमेंट एक्ट रे कराई ठीक अच्छे 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 रे এটা করা হয়েছিল তেমন आंसर 2 ओनली हम बी हम नेक्स्ट ऐसे बोलाने ओके consider the following sentences and state how many of them are correct. It a transgender act opere. Transgender act is a law in India that aims to protect the rights of the transgender individuals and provide for their welfare. Obviously, the statement 1 ta ठीक अछि. It was first introduced in the parliament as a private member bill. It भी ठीक अछि. 2014 रे हितला. It however does not define the term transgender. एटा पिलाने भूल अच्छी कारण से एक्ट रे ट्रांसजेंडर क्या कह जाए से डिफाइन होती तेणु इट डज नॉट जो देखिए एटा भूल अच्छी एटा ठीक अच्छी एटा ठीक अच्छी तेणु ओनली 2 हम आंसर ए हम आंसर प्राइवेट मेंबर बिल माने जो बिलटा मेंबर यूज करे मेंबर जी मिनिस्टर नुह अर्थात अपोजिशन मेंबर माने एटा को करथांती जदियो एटा पास बेसी हुए नहीं किंतु से माने बिल इंट्रोड्यूस करि पारिबे बहुत सारा बिल होती प्राइवेट मेंबर बिल भी 2014 रे इंट्रोड्यूस होता प्राइवेट मेंबर हिसाब ट्रांसजेंडर बिलटा कि पास होता पर सरकार ताकू आधार करिकी ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 तैयारी कला ओके नेक्स्ट आसवा ये लिखाई पे स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट बिकॉज द ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट 2019 इन इंडिया डिफाइन्स a transgender person as someone whose gender does not match the gender assigned at birth. Transgender माने जन्म समय जो जेंडर थी से चेंज हो ट्रांसजेंडर ओके सो ट्रांस वुमेन इंटरसेक्स वेरिएशंस जेंडर स्क्वेयर इंडिविजुअल्स दोज विथ सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज लाइक किन्नर हिजरा आरावणी जोगता एगुरा सब अच्छा भिन्न भिन्न स्टेट ठीक अच्छे तो से नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following consider the following statements. Sikkim became the 25th state of Union of India. It celebrates 15th anniversary in May 2025. Article 371G grants special provision to the state of Sikkim. How many of the above are correct? देखिए Sikkim is not the 25th स्टेट क्या गोवा हूँ 25th स्टेट हूँ 22nd स्टेट यहाँ ठीक अच्छे यहाँ भी ठीक यहाँ भूल अच्छे मैंने यहाँ ठीक अच्छे इन मे 2025 मे 16 बोधे से तो 50th एनिवर्सरी कारण 1975 मसीह सिक्किम तैयारी तेणु ए वर्ष सिक्किम तार 50तम जन्मवार्षिकी पालन कर देखिए जीटा स्पेशल ग्रांट नो एफटा हूँ सिक्किम स्पेशल प्रोविजन दिखाई एवं यहाँ 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 रे ऐड कराइला जहाँ अंडर सिक्किम को स्पेशल स्टेटस दिया स्पेशल प्रोविजन फैसिलिटीज दिया ओके तो यहाँ आम देखा ओनली 1 इज करेक्ट सी ओनली 1 नहीं कि ओनली 1 नेक्स्ट आसिया क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छे यहाँ
Which of the following legislation, consider the following legislation: the Foreign Exchange Management Act, the Passport Entry into India Act 1920, the Registration of Foreigners Act 1939, the Foreigners Act 1946, and the Immigration Carriers Liability Act 2000. How many of the above acts have been repealed by the newly formatted Immigration and Foreigners Act 2025? ए चारोटी पांचटी एक्ट भितर को एक्ट गुड़िक इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट द्वारा रिपील कराई गोटे माने सबज्यूम कराई बोली कह पड़े हम ता अंडर पड़े आसुँच ये सब एक्ट गुरा आ दरकार ना गोटे एक्ट रोटा ना हम इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट जोटा कि इलीगल माइग्रेशन है किए फॉरेनर कौन केमती फॉरेनर आसिले कौन हम कौन ये सब जिनस गुरा ये एक्ट रे क्लीयरली करा जाउछि रेगुलेट तो यहाँ जो देखा यहाँ कौटा रिपिल देखा यहाँ ओनली 4 रिपिल कारण 5 जो 1 नंबरटा रिपिल होनी कारण यहाँ अच्छी फेमा आउ सब गुरा रिपिल हो तो मैंने 4टा एक्ट रिपिल होता इम्पोर्टाट अच्छी इमिग्रेशन आउ फॉरेनर्स एक्ट 2025 द्वारा ओके ओनली 4 हम आंसर नेक्स्ट आसे पे एनसीपीसीआर उपरे क्वेश्चन द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इज स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 द कमीशन became operational on 5th March 2007 commission is used for protection of children rights from sexual offences act and the Juvenile Justice Act 2015. Then देखिए यदि NCPCR होची apex body to deal with offences against children मानक विरुद्ध शिशु अपराध को कमेया पई एवं पिला मानकु प्रोटेक्शन देवा पई तांकर ग्रोथ पई जहाँ जहाँ हिंड्रांस बा अंतराय प्रतिबंधक होची ताको हटेया पई भारत सरकार एनसीपीसीआर एस्टाब्लिश कर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ये से एक्ट अंडर रही तो यहाँ ठीक अच्छी यहाँ भी ठीक अच्छी यहाँ भी ठीक अच्छी ये 2टा एक्ट ऑपरेट करे सेक्सुअल पोक्सो जोटा पोक्सो आ गोटे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ये 3 जन तो यहाँ ऑल आर करेक्ट 1 2 3 आंसर हम 1 2 3 आंसर हम यहाँ आंसर हम कौन सी There is a question on public policy. Progressive taxation is an example of. Progressive taxation माने हम जोटा income tax कहूचे, तो income tax is an example of. Income tax is an example of what? Substantive policy माने कौन गोटे प्राइमरी जिनस आरंभ करिबा जेंति तर नेशनल मिनरल पॉलिसी हला सेटा मिनरल ऊपर पूरा ऑथेंटिकेट गोटे रिपोर्ट दबो या करा हबो न करा हबो डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी है जो सोशल प्रोग्राम गुरा सब करा रिडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीटा कहीं कहूँ प्रोग्रेसिव टैक्सेस रिडिस्ट्रीब्यूटिव कारण जो मैंने हायर इनकम ग्रुप तांको ऊपर टैक्स बसा जाए एवं सेटा देशर डेवलपमेंट रे कार्यकारी हुए लोअर इनकम ग्रुप मान को टैक्स बसा जाए नहीं अर्थात एग्जेम्पशन रहे बहुत लक्ष्य पर्यंत तेणु से प्रोग्रेसिव टैक्सेसन जोटा आम कहे डायरेक्ट टैक्सेस गुरा जो अच्छी इनकम टैक्स এটা হচ্ছে রিডিস্ট্রিবিউটিভ পলিসি ওকে রিডিস্ট্রিবিউটিভ পলিসি যেটা আমি দেখুছি রিডিস্ট্রিবিউটিভ পলিসি নেক্সট কোশ্চেন দেখো লাস্ট কোশ্চেন অফ দ্য সেশন হোয়াট ইজ দ্য কম্পোজিশন অফ ইলেক্টোরাল কলেজ ফর ইলেকশন অফ ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ इंडिया भाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन आर्टिकल 66 क्लॉज 1 अंडर रे करा जाय था एवं एथरे भी इलेक्टोरल कॉलेज अच्छी ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव ओनली इलेक्टेड मेंबर्स नो ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट एटा होची आर्टिकल 66 क्लॉज 1 रची इलेक्शन ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज ओके सो प्लान एटा लास्ट क्वेश्चन थिला नेक्स्ट आमे
जो काली माराथन आनिबा से भी आउरी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन प्रिपेयर कराई जोटा कि एप्रोप्रिएट हम प्रिलिम कॉन्सेप्चुअल क्लारिटी निश्चित भाव में सेशन को देख आ बहुत यूजफुल हम तुम मान ओके निजे देखिपड़ क्वेश्चन वेट तो निश्चित भाव में जॉइन कर मोर प्रति बुधवार सोमवार बुधवार और शुक्रवार अच्छी आ माराथन प्रति सैटरडे रे सबू सब्जेक्ट उपर रोचे तो निश्चित भाव जॉइन करो जो मोर आधा 247 OPSC को सब्सक्राइब करनी एवं गेट नोटिफाइड अबाउट आवर अपकमिंग prelim sessions. Thank you very much to all of you for watching me and give your constructive comments and also share it to other aspirants those who do not know. God bless you all.